great. Mr. Prabhat, Sir, I'll just may I request interrupt the you, sir? JDDS to button, please. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Sir, I am Mukul Vashish, sir, from headquarters DGBR, JDDNS. Sir, the expectation from our side is the innovator should provide us digital elevation model for various alignments of tunnel, sir. That should have various cost inputs, the approach, roads alignments, and all the geological factors, sir. Means they should give us various tunnel alignments so that we can choose the best one, the best alignment. So that is our expectation from BRO, sir. So I guess the startups could hear it is not one particular place we are talking about. We are talking about in general that your solution should facilitate border road organization or PWD or any one for that matter. Here, the problem statement had originated from border roads. Otherwise, your solution could be applicable to anyone, right? So, this sort of a solution which facilitates in finalizing the alignment. Generally, what happens is whenever you're generally having a mountain pass through which the traffic flows. Finally, you want to cut a tunnel through it and want to ensure the shortest possible way to connect two places. So in this, you have a number of places wherein you see ki, how is the rock strata, how is the going, how much of overburden is there. Lots of things go into finalizing a tunnel alignment. So the best of the tunnel alignment, which is geographically good as also economically beneficial and faster to construct, would be chosen. So to come to that, we need to have options with us. For that options, we need to work out. So this digital elevation model would help us in all those things, right? I hope all the startups are on board as regards this. It is not for one particular thing we're talking about. It's anywhere in the mountains or so. I hope it's good. Like, sir, you were talking about requirement for cost and time feasibility, correct? That is subsequent. That's the final So, aim. hello. That is the final aim. Yeah, okay. Anything So, which is getting constructed in a lower final, cost in a faster time frame, that goes on for anything. Even Burj Khalifa you want to build, you want to do that only, right? Fastest and okay. Then most economical. you are talking about that it varies according to the geographical area. All right. So one scenario is that we just select a direct path from one end to other end, a straight line path. It will be shortest path. And second situation can be that there are some zigzag path, but in hilly areas, by selecting that zigzag path, we have to lower requirement of cutting mountains. Okay. So what are you expecting that you will prefer, and for that you are asking for proper alignment system that you start digging from first and second both end and meet in the center. This one thing, or you want also somewhere prefer that one zigzag path also. Did you got me, sir? What I'm asking? Hello. Hello, could you please repeat the question, sir? Can we talk in Hindi, sir? So for better understanding, if you are Yes, You're comfortable. welcome. we Please can. go ahead. Yes. ओके जैसे कि आप बता रहे हैं कि टाइम और पैसा दोनों बचाना है एक तरह से, ठीक है, सही बात है। तो एक सिचुएशन ये हो सकता है कि हम दो एंड को सेलेक्ट करें और दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसी डायरेक्शन में हमें दोनों तरफ से खोदते हुए एक जगह मिल जाना है। तो एक ऐसा सिस्टम हम बनाते हैं जो कि हमें डायरेक्शन से डेविएट ना होने दे। दूसरा ये कंडीशन हो सकता है जैसे जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है,
तो कोई हिली एरिया में हम देखते हैं, तो जैसे हिली एरिया में कहीं पे ज़्यादा रॉक है, कहीं पे कम रॉक है, तो अगर हम जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं तो हमें कम रॉक को कट करना पड़ेगा, बट हमारा लेंथ बढ़ रहा है। बट यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है, मतलब टाइम काफ़ी कम में हो जाएगा। तो आप कौन सा ज़्यादा ये प्रीफर कर रहे हैं? दोनों आप फॉलो करना चाहेंगे या फिर फर्स्ट वाले को, जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए थे? प्रेफर तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को ही करना चाहेंगे। ओके, जितना तो कुछ स्ट्रेट कुछ रहेगा। ऐसा कुछ इस टाइप का हाँ। सिस्टम जैसे गूगल मैप्स में होता है कि एक रूट डिफाइंड होता है वहाँ पे, वहाँ से अगर हम लोग किसी दूसरे रूट में जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिख जाता है कि हम लोग मेन रूट से डेविएटेड हैं। तो कुछ इस टाइप का अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह अगर आपको दिया जाए तो, जैसे कि आप टनल में खुदाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, उसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, और जैसे खुदाई करते टाइम आप स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, इन इन सम पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आप थोड़ा लेफ्ट की तरफ बढ़ने लगे, तो 5 या 7 मीटर डिस्टेंस आगे बढ़ने पे आपको दिख जाएगा कि नहीं, आपका जो स्ट्रेट लाइन है उससे आप 5 मीटर डेविएट हो चुके हैं। तो इस टाइप का सिस्टम मतलब सस्टेनेबल है सर? वैसा सिस्टम तो रिक्वायर्ड भी होता है ड्यूरिंग डिगिंग। बट मेरा है कि मुझे दोनों पोर्टल पता है कहाँ जाना है और कहाँ से इन करना है। अब उसके बाद देयर में भी 2-3 अलाइनमेंट्स जो मतलब हम लोग ऑप्ट करते हैं, उसमें से प्रेफर्ड अलाइनमेंट को चूज करते हैं। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड अलाइनमेंट, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? का कोई डिजिटल एलिवेशन मॉडल अगर बनाकर उसको हम 2-3 अलाइनमेंट पर दिखा के और हम उसका प्रोस कॉन्स देखकर फाइनलाइज करें अलाइनमेंट को। तो ये Sir, I have a question. अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, एक मिनट सर, 2 या 3 अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये 2-3 अलाइनमेंट कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, इस चीज़ को बताएंगे? नहीं, जैसे कभी एक होता तो है सीधा कि सीधा हम स्ट्रेट, समझ, हाँ, स्ट्रेट लाइन तो सीधा समझ में आ रहा है, बट इसके अलावा बाकी कौन से 2 अलाइनमेंट की आप बात कर रहे हैं? जैसे एक तो स्ट्रेट लाइन हो गया जो डायरेक्ट पोर्टल टू पोर्टल कनेक्ट हो गया। कभी होता है कि अब ये इससे ज्यादा फिजिबल जो है हमारा वायबल जो होता है किसी और अलाइनमेंट पे जाकर और फिर रोड से कनेक्ट कर दिए उस पोर्टल को, तो मुझे जो है उधर टनल का लेंथ भी शॉर्ट हो गया और रोड से कनेक्ट कर दिए और इकोनॉमिकल हो गया हमारा वो अलाइनमेंट। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली वही जिगजैग पाथ एक तरह से आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट ना? हाँ, जिग जैग मतलब लास्ट में जाकर फॉलो करें, बस टनल को तो स्ट्रेट रखेंगे। हम्म। जस्ट उसका जो नहीं। डायरेक्शन है, अच्छा, स्ट्रेट ओके। के लिए डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। अच्छा, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट क्लैरिफाई। सी, पहले आप समझिएगा कि आप देख रहे हैं ना, डैम बनती है। आप डैम डैम जी। तो कई कई जगह में देखी होगी सब लोगों ने। हम्म। 10 साल तो सिर्फ स्टडी होती है कि वाटर लेवल कितना है, कितना इरोजन हो रहा है। ऑल दिस थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स आर स्टडीड इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ डैम। कि हाँ डाउनहिल हाँ। में कितने कितने विलेजेस हैं, वाटर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, कितना प्रेशर। सो नंबर ऑफ स्टडीज आर गोइंग ऑन टू फाइनलाइज। ऐसा नहीं है कि एक जगह में हम फिक्स कर लो, ऐसे कि हाँ हाँ। नैरोएस्ट पाथ ले लो तो सबसे छोटी बन जाएगी डैम, ऐसा नहीं है। सबसे नैरो पोर्शन में आप डैम बना दोगे तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। और रॉकी पोर्शन में हाँ बनाओ सबसे बढ़िया है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। नंबर ऑफ स्टडीज कम इनटू इट। इसमें जब फाइनल सर्वे होता है, इसमें जियोलॉजिस्ट भी होते हैं। आपको लगा होगा कि शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन है ये बेस्ट लाइन है, बट जियोलॉजी, जैसे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है देहरादून में, उनके रेप्स भी आते हैं, वो जियोलॉजिस्ट है, बहुत एक्सपीरियंस है उनको। वो रॉक फेस को देख के बता सकते हैं इसमें फॉल्ट होएगा करके। आपने तो बिल्कुल अलाइनमेंट बिल्कुल सही लग रही है, यहाँ से यहाँ ले जाओ, अच्छा है, कटिंग में भी सही रहेगा, बट ही विल कम एंड स्ट्रेट अवे आपको बोल देगा ये जो रॉक फॉर्मेशन है इसमें फॉल्ट है। दैट मीन्स आगे जाकर इसमें इश्यू आएगा। ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स अ फॉल्ट। फॉल्ट फॉल्ट एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो रॉक्स तो में होती है, रॉक्स में। माउंटेन्स में होती है। ऑलराइट। अभी आप हम्म अगर आप आगे देखोगे, हमारा जो रोहतांग टनल कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो अटल टनल, ऊपर एक लेक था, सिरी नाला। आप जैसे टनल खोदना शुरू किए, अंदर चलते रहे, आफ्टर सम टाइम बिल्कुल आपको वाटरफॉल की तरह आ गया अंदर पूरा पानी। आप
एक दिन में पूरे मशीनें इतना इक्विपमेंट रखकर आप 1 इंच नहीं खुद रही थी, 2 इंच, इतना प्रोग्रेस था आपका। पूरा पानी बह रहा है अंदर से, वाटरफॉल हो रहा है। आप बताओ कैसे करेंगे? पहले रखिए अलाइनमेंट सब करके, बेस्ट अलाइनमेंट चूज करने के बावजूद भी यह हाल है। इसके अलावा जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड भी होती है, सिर्फ टनल नहीं होती है, टनल तक के माउथ को पहुंचने के लिए भी रोड बनती है अलग से। तो अप्रोच रोड में इतने सारे एवलांच प्रोन जोन्स हैं, विंटर में पूरा स्नो अक्यूमुलेशन रहता है, अचानक एवलांच आती है और सबको लेके चले जाता है, गाड़ियां, घोड़ा। इफ यू, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो इट्स नॉट दैट स्ट्रेट लाइन यू ड्रॉ एंड डू दिस। सो देयर इज अ डिजिटल एलिवेशन मॉडल विच हेल्प्स अस साइंटिफिकली टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करी जाएगी, 3-4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जाएंगी, उसमें सारी माउंटेन, हिल फेस, सब कुछ स्टडी किया जाएगा। ओके, अप्रोच रोड स्टडी किए जाएंगे। ये सारा लेने के बाद में फिर हमको फाइनलाइज करना पड़ता है कि विच अलाइनमेंट वुड बी द मोस्ट suitable, टेक्निकली suitable, financially suitable, right? Both these aspects are taken into consideration. So it is not as कि आप ideally what what OC 51 RCC had mentioned, yes, ideally it should be a straight line, tunnel पर से वो तो straight line होएगी तभी वो सीधा आएगा ना। और उसकी जो एलिवेशन भी है, जैसे हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप, हर एक रोड आप देखेंगे, सारी रोड फ्लैट नहीं होती है, थोड़ी एलिवेशन होती है, कभी रोड चढ़ती है, कभी उतरती है, ठीक है। वी वुड आइडियली वांट एवरीथिंग टू बी इन अ स्ट्रेट सेम एल्टीट्यूड ऑलमोस्ट। जो आपका एक एंड है तो और दूसरे एंड से एग्जिट हो रहे हैं, आइडियली वो भी सेम होना चाहिए, ठीक। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर व्हेन इट गेट्स ऑन टू टेक्निकलिटीज। Notwithstanding, why we are here for is for a digital elevation model. People who are specializing in this model, who can help us, आपके साइंटिफिक तरीके से हमको वो अलाइनमेंट फाइनलाइज करने में फायदा हो। आपको टनल बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको डिजिटल एलिवेशन मॉडल आप हमारे को वर्कआउट ऐसा दे सकते हो जिससे हमारी स्टडी इजी हो जाए, हमारी रिकॉग्निशंस इजी हो और हम एक परफेक्ट अलाइनमेंट चूज कर पाए साइंटिफिकली एंड टेक्निकली। वो बात, उसी चीज के लिए हम चल रहे हैं। वो कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट आप छोड़ दीजिए, वो आरसीसी वाले एक्सपर्ट हैं, ठीक है, बॉर्डर रोड्स एक्सपर्ट है, ऑलरेडी टनल्स बना चुके हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट टनल भी है बॉर्डर रोड्स में, और भी हाई एलिवेटेड टनल्स भी बन रही हैं, तो दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स, नो इश्यूज। बट दे वांटेड सम एस्पेक्ट्स wherein they feel that this could help them, and for that we are here. So let's restrict ourselves to only the digital elevation model rather than anything else. Okay, I hope everybody is on board on this. Sir, I have a question, if I may. Hello? Please. Sir, my name is Uday. Yes, please. So basically, in the problem statement, it is mentioned that we need to develop a DEM with the help of AI. So my first question is that what is the type of data we are supposed to be getting? And like for example, is there already some sort of a hardware which is collecting some sort of a point cloud data or satellite imagery is there? Yeah, ye option B, we are supposed to provide that, okay, these are the different methods of data collection, and once the data gets collected, then this is the pipeline to convert the data into a DEM. Hello? I would request Border Road to take on this question. Hello. Yes, sir. इसमें I think you have to provide us the data. We want the end solution. We want that key you will Understood. provide the final to us, that these are the various tunnel alignments you should opt for, and these are the aspects of each tunnel alignments, and now you can choose which is the best. So you have to provide us the data also, and then you can feed, and then you get that artificial or digital elevation model of each tunnel alignment which you are supposed to give us. So we Got want it. So, sir, एक follow-up question है. So, like, let's say, for example, in order to collect this type of a data, some specialized hardwares are required. Like, let's say, for example, LiDAR scanner required होता है, या photogrammetry camera होता है. So, these also options we should include it in our proposal. yes, you are free to do. Okay, understood. And one last question, sir, and then I think so. Is it also required that we collect this type of a data for digital elevation model inside the tunnel as well, or is it only limited to the exterior surface?
I couldn't get you exactly. Okay, What do you so want to? I'll explain. So like let's say जो टनल का जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाना पड़ेगा, वो उसका टनल के इनसाइड इंटीरियर का भी, यानी कि बेसिकली जो एक ऊपर से पहाड़ जैसा जा रहा है उसके अंदर टनल फिजिकल स्पेस में कैसा दिखता है उसका भी 3D डिजिटल ट्विन चाहिए, या सिर्फ जो ऊपर का सरफेस है यानी कि एक्सटर्नल जिसको टेरेन बोलते हैं, ओनली दैट इज रिक्वायर्ड? Sir, is the data required before the tunnel construction only, या मतलब एक बार टनल बन गया है तो उसकी अलाइनमेंट करेक्शन के लिए भी एग्जिस्टिंग टनल का भी डेटा कैप्चर का प्रोसेस हमें इंक्लूड करना है? As of now, we want जो हमारे ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट्स है जहाँ पे फ्रेश टनल्स बनना है उसका आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल देंगे। आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो आप एग्जिस्टिंग टनल्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। Okay, okay, sir. Thank you. Please understand one thing that हम लोग को ना, हम मैप सबसे पहला, अगर हमको कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई भी इंजीनियर, आपको चाहे घर बनाना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले मैप लेआउट करता है। मैप पे स्टडी होती है, बोल रहे हैं कि ये रोड चल रही है, यहाँ से ड्रेनेज चल रही है। आई एम जस्ट टेलिंग अ सिंपल थिंग, आपको कोई रोड बनानी है या कोई घर भी बनाना है, कोई अपार्टमेंट बनाना है, तो जो भी बिल्डर है, जो भी इंजीनियर्स होंगे, वो सबसे पहले मैप पे शुरू करेंगे काम अपना, कि भाई हमारा एरिया कितना है, स्लोप क्या है, वो सब ग्राउंड में स्टडी करें, मैप पे स्टडी करेंगे, फिर ग्राउंड पे जाएंगे। अभी जो मैप है ये सब 2D चीजें हैं, तो 2 डायमेंशनल चीजें हैं, इसमें एक्यूरेसी कम है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अ डेम डेटा, इट्स अ 3D एलिवेशन मॉडल। आप सोचो कि जैसे गूगल अर्थ हमारे को दिखा रहा है पूरी चीजें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर है ना। अगर आपको गूगल मैप्स में आपको जाना है कहीं से, तो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कि मैंने प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है, तो आपके पास ऑप्शंस है कि वो यहाँ से भी दिखा रहा है, इतने टाइम पे जा रहा है, दूसरे जगह से भी दिखा रहा है। लाइकवाइज वी नीड अ 3D एलिवेशन मॉडल, दैट्स व्हाट अ डिजिटल एलिवेशन मॉडल which is there. We would want that those people who are actually working on this to provide us the 3D computer models of the Earth's surface and those representation of those places on a layer by layer, so that we understand topographic surface of Earth, right? अभी सपोज हमारे पास पूरा आप 3D मॉडल दे रहे हो, बट उसमें बहुत सारा जंगल और ये सब है। अब मैंने एक क्लिक किया, उसमें सारी की सारी पेड़ उड़ गए, ओके, that gives a better understanding. हाँ, now the terrain is looking like this. तो बैर अर्थ, अगर सबसे बैर भी हमको देखना है कि ये सारी लेयर बाय लेयर आउट करने के बाद में, ठीक है, तो दो सॉर्ट ऑफ आई एम जस्ट गिविंग यू कि दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, व्हिच हेल्प्स अस imagine things and helps us find the better alignment out of whatever we have worked out on the map. Okay. हेलो। Yes, Mr. Ravi. नमस्कार सर, मैं रवि बरतोलिया। हम लोग सर हिमालयन जियोलॉजी पे एंड अर्थ साइंस पे काम कर रहे हैं काफी टाइम से। मैंने आपकी प्रॉब्लम सर समझी एंड 51 RCC एंड जो सब कुछ हम लोग हिमालय टेरेन, लद्दाख एंड उत्तराखंड टेरेन पे ही काम कर रहे हैं, जहाँ PRO काम हम लोग डीप अर्थ साइंस पे काम कर रहे हैं। एंड मॉडलिंग को सर हम अच्छे से समझते हैं कि मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग, टोपोग्राफी मॉडलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें सर जो हमारे यहाँ पे बात हो रही है प्रॉब्लम को लेके। सर मैं एक चीज कहना चाहता था, क्या अभी तक उन जगहों पे 51 RCC से पूछना चाहूंगा सर, क्या वहाँ पे अभी ERT या एयरबॉट कुछ भी सर्वे किया है उस चीज को लेके? क्योंकि हम लोग डेटा कलेक्शन सर्वे, आई नो जियोलॉजिकल सर्वे, हम GSI जियोलॉजिकल सर्वे, जैसा आपने बताया वाडिया, हम लोग उनके साथ अटैच है इन सब चीजों के लिए जो हम काम कर रहे हैं। We can provide each and everything: geology solution, geotechnical help, and modeling, 3D modeling, 2D modeling, topography modeling. We know, sir. Great, Mr. Ravi. I think you are someone who is working in this field, who understands this particular subject well. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Mukul, can we have the problem statement being flashed on the screen एक बार? आपके पास है? I have the problem statement, sir, but अगर आप लोगों can के I पास share it? इनिशियल कुछ भी डेटा नहीं है, तो
अगर जो स्पेसिफाइड लोकेशंस है, बाद में हम लोग स्पेसिफाइड लोकेशंस हैं, वी कैन इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं सर उसको। अगर डेटा नहीं है आप लोगों के पास ज्यादा उस चीज को लेके, हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। Yeah, fine. If you have understood the problem statement well, it's fine. We want, Yes. see, the point is you've got a problem statement and you are Yes, the sir. applicants. You are the people who are going to find the solution to it. I You know, may be sir. having a solution, a part solution you may be having. But the point is, there'll be like, हमारे पास एक problem statement है, there'll be 10 people who will be interested to do this job. तो आप जब अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन आप जब डाल रहे हो, आप अपना टेक्निकल प्रपोजल जब बना रहे हो, तो आपको ऐसी क्या क्वेरीज हैं जो चाहते हो कि पहले ही क्लैरिफाई हो। तो मैं वो क्वेरीज अब पुट फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा हूँ, जो ये लोग आंसर करेंगे। जो आप कल अपना टेक्निकल प्रपोजल देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यूजर रिक्वायरमेंट है उससे काफी अलग हटके है। यूजर की रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए जो आप प्रपोजल पुटअप कर रहे हैं। आपके पास ब्रॉड बेस्ड एक वर्किंग ये होगा, एक्सपर्टीज होगी, बट व्हाट द यूजर वांट्स, वी वांट दैट यू शुड कनेक्ट विद देम। तो दैट्स द रीजन कि आपका प्रपोजल उस हिसाब से टेक्निकली बनाइए ताकि आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो एंड यू कम फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। दैट्स द एम ऑफ दिस आउटरीच, राइट टेक्निकल सर, आउटरीच। वो जरूरी है सर, बट प्रॉब्लम ये है कि हर हिमालयस टेरेन एक इक्वल डेटा कलेक्ट करने के लाइक एरिया नहीं होता। जैसे उत्तराखंड में वी कैन, लो ऑल्टी है, 3000 ऑल्टी है, तो हम लोग जाके सर्वे कर सकते हैं ईआरटी सर। जैसे 51 आरसीसी सर को पता होगा कि व्हाट इज ईआरटी सर्वे एंड ऑल। बट इन लद्दाख, तो 5000 and some terrains are very high to climb. We don't have to take survey on that area, so it is the most difficult area. Then we go to airborne survey, radar survey, and there are so many of surveys over there. भी आजकल काफी नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई है सर, हम लोग उस पर भी कनेक्टेड हैं। तो एरियाज टू एरियाज भी डिपेंड करता है सर, आप अच्छे से समझते हैं। कुछ एरिया अगर स्पेसिफाइड हमको डिसाइड हो जाए कि दिस इज द एरिया, ये सब एरिया है, तो हम लोग उस पर थोड़ा मॉडलिंग देख सकते हैं किस तरीके से वी कैन डू। बिकॉज यू नो आज 8 तारीख है, 3 दिन में ही सर लास्ट डेट है। इट्स क्वाइट टफ टाइम सर। Mr. Ravi, I guess you have the understanding of the things. And please understand who is your user finally. Your user is Border Road Organization. Yes sir. And where do they function? They operate in the northern borders, the eastern borders, a little bit on the western borders, even in a foreign land wherein such terrain and such difficulties exist. All right. I know sir. So the thing is, I feel people like you are the right people to be applying for this. All right. You have the base working expertise in this. So I guess you will not be too much away from what is expected from you. All right. Unless until something specifically Border Roads wants to mention, I would request कि अगर और भी कुछ है जो इनसे आपको चाहिए तो कीजिए, नहीं तो what is he going to, what is likely to be the proposal आप पूछ लीजिए. So if it's okay, just give them a thumbs up. Mukul? Hello. Hello. Sir. Hello. Am I audible, sir? Yes sir. Sir, as of now, location koi particular dena to it will be difficult for us, but you can, as Anthony sir has told, sir, ki in general, border roads works in northern and eastern high altitude areas. So, keeping view of those terrains, you can work on, sir. Perfect sir, I understand. Mr. Ravi, broadly, I suppose your proposal should not be way off the mark unless until things have been gooped up in putting up the proposal. ठीक है? But for all others, I'm telling कि whoever is here, बहुत सारे nice, अभिषेक, अदिति, आलोक, DB Potential, इकबाल, ठीक है, कार्तिक, कौशिक, Rahul, so many people are there in this. I'm sure you resonate with this particular topic and that's why you're here, all of you. So, please understand, we have told you where this particular thing is required and who is your end user.
All right. And then there are a number of things available. Try and moot a proposal on those angles, which you will feel ki this will be able to, broadly problem statement is there. And once the proposals are seen through, I'm sure the ones which are relevant will be shortlisted. Okay. Then while we will be calling you for the final, also if you have any queries separately also you can post it. But as of now, since the last date is 11th, we would request you kindly concentrate on these angles as to who is your end user and where these tunnels are likely to be constructed and what sort of a DEM data is required for the tunnel alignment or construction, right? So concentrate and restrict your proposal onto that uh, uh, this thing, and I'm sure you would not be way off the mark, and surely you should be getting a short list. All right. सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना Hmm. है सर अभी शायद सर बता रहे थे कि आप ही बता रहे थे सर कि वाइल टनल होते वक्त हमको बहुत सारे शैलो वाटर्स मिल जाते हैं शैलो वाटर्स माने मैं तो लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारा रोहतांग आई टनल नो जो है सर, ना। हाँ आई नो, मुझे पता है कहानी सर। सो क्या उसके लिए भी आप लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए सर? मैं पूछ रहा हूँ कि या उस पे भी यार काम कर रहा है कुछ इंटरनली, बिकॉज़ वी हैव सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली प्रॉब्लम आया था तो उसका सोल्यूशन भी निकाल दिया है, तभी आज के डेट में टनल है वहां पे। ऑल राइट। ओके। तो इफ यू सी, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल बताऊं रोहतांग टनल की ही, दो जगह से कंस्ट्रक्शन हुआ था। एक साउथ पोर्टल था जो मनाली की तरफ से था, यस एक यस नॉर्थ पोर्टल था उस तरफ से, राइट? यस सर। तो इफ यू सी द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड वाज वेरी गुड बिकॉज the hard rock strata and other things helped them, right? Unlike the southern side wherein the travel time itself to the portal was quite at this thing, right? To reach the portal itself, यहाँ से काफी रोड कटिंग होकर वो स्टार्ट पॉइंट में पहुंचे थे। राइट। ऑलराइट। अनलाइक नॉर्दर्न पोर्टल जो है सिसु की तरफ, वो बिल्कुल रोड के आसपास ही था, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और कटिंग में भी इतना आसान नहीं रहा क्योंकि लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस वर देयर फॉर डंपिंग। इधर पे ट्रीज नहीं थी, उस तरफ पीछे अगर आप सदर्न पोर्टल देखोगे बहुत सारा ट्रीज और स्लोप्स और वैलीज काफी था। और राइट। विंटर्स में इतना ज्यादा स्नो अक्यूमुलेशन होता है, एवलांच प्रोन जोन्स थे बहुत ज्यादा। Avalanche prone उस तरफ भी थे, but relatively lot of open space was there for functioning in the northern portal. So these sort of technical other aspects sort of, not only tunnel, when you plan the tunnel alignment, उसकी accessibility, उसके आसपास का administrative setup, lot of things are being mud dumping site। इतना टनल का आप जो खुदा हुआ मिट्टी निकालोगे, वो तो कितने एकड़ कितने पहाड़ बना देगा उसमें, right? These are to be dumped properly. So lots of things are to be planned. So finally when a tunnel alignment is fixed, all right. Yeah, so these challenges are there obviously, वो तो subsequent हो गया, अभी तो सिर्फ planning के लिए है for choosing, and subsequently when you dig up a tunnel or something, that time the requirement may be separate. That is a separate point altogether. All right. So as of now, this thing would be restricted to only developing and proposing a digital elevation model, which helps the user in finalizing the best alignment. Right. That's the thing. I hope most of you who are hearing us are on board as to what's our requirement. Please, I would recommend all of you, I will encourage each and every one of you who are here to kindly put up a proposal. Take that time, put up a proposal. Don't worry about being wrong. Put up a proposal. बहुत सारी चीजें यही होती है, आते हैं बट अप्लाई नहीं करते हैं। Don't, that's the biggest mistake. मैंने बुक पढ़ ली कि कैसे मैंने बॉडी बनानी है, ठीक है, बट कभी जिम गया ही नहीं तो क्या फायदा है मेरे को बुक पढ़ के। तो यू आर ऑल हियर, आई वुड टेक कि आपने जितना टाइम और एफर्ट यहाँ पे आने के लिए किया है, कंपाइल योर थॉट्स, पुट अप अ टेक्निकल प्रपोजल। आई एम श्योर आप लोग सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से इस चैलेंज को रेजोनेट आप कनेक्ट करते थे, तभी आप लोग यहाँ पे हो। सो पुट अप अ गुड प्रपोजल इफ यू वांट, सपोर्ट इट विद सम गुड ड्राइंग्स एंड अदर थिंग्स। ऑल राइट, उसके साथ में आप सपोर्ट करके बनाइएगा इसको। एंड टेक प्रपोजल प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप फ्लो डाउन करो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछ क्या रहा है और आपका एंड यूजर कौन है। यू विल फाइंड सॉल्यूशंस, आपको कहीं लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर योर प्रपोजल विल बी समथिंग विच विल बी वेरी रेलेवेंट। ऑल राइट, सो आई वुड रिक्वेस्ट, if at all any other questions are there, kindly shoot, or else I think
we are done. As you have mentioned that you want a kind of system that will do a 3D mapping, provide you will have a map which will show different types of 3D view like Google Map. We can switch the sceneries like in one theme we can see with forest, and in other theme we can see without forest, only rocks, and in other mode we can see a normal a plain land type. Okay, so with it you also want us to do various inspections based on different parameters. नहीं, इसमें मेरा एक पॉइंट था, इसमें आपको अगर हमें फाइनली टनलिंग ऑप्शंस देने हैं तो आपको ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में करना ही पड़ेगा, तभी आप हमें कोई भी 3D मैप या डिजिटल एलिवेशन मॉडल दे पाएंगे। आपको अपना बैकग्राउंड स्टडी के लिए उस जगह का रैकी एंड सर्वे वो पूरा करना ही पड़ेगा। सर 3D मैप प्रोवाइड करना इज डिफरेंट थिंग, और जो उसका जो इंस्पेक्शन डिफरेंट पैरामीटर को बेस बना करके करना है। जैसे आप बताया कि एक टनल का खुदाई हो रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, और बीच में एक टाइम ऐसा था कि मशीन से खुद नहीं रहा था और थोड़ा आगे बढ़ने पे हुआ कि अचानक से पानी आ गया। तो ये इन सब का जो है सेंसर्स वगैरह से पहले इन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, ये एक अलग चीज़ हो जा रहा है। तो जैसा कि आप बताया कि आपको 2-3 रूट चाहिए, तो हम आपको 2-3 आप कैसे ऐसा असिस्ट कर पाएंगे? आप क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं इसमें? सर दोनों चीज़ किया जा सकता है। फर्स्ट वाला जो है जस्ट हम आपको ऊपर से एक तरह से 3D व्यू आपको दे दें, और आप उसमें से अपना पाथ खुद से सेलेक्ट कर लें, एक ही ऑप्शन हो सकता है। ये ज़्यादा आसान होगा हम लोगों के लिए प्रोवाइड करना, और जल्दी पॉसिबल होगा। बट जो दूसरा पार्ट जो है कि हम उस पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करें खुद से, मशीनरीज डिफरेंट टाइप के मशीनरीज और सेंसर्स का यूज करके, तो ये किसी एक पर्टिकुलर फर्म के लिए पॉसिबल नहीं। इसके लिए जैसे आप बताए जियोलॉजिस्ट होंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे, इन लोगों का टीम प्रॉपर चाहिए ही होगा। ठीक है, तो इनके सपोर्ट्स के साथ ही ये सब चीज़ें स्टडी करना पॉसिबल हो पाएगा। फिर हम आपको ये डेटा प्रोवाइड कर पाएंगे कि फिर कि इस रूट में ये चीज़ें हैं, और इस रूट से इतना ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आप लोग डिसाइड करेंगे। तो ये इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है एक तरह से, बट इसमें आपको हर एक चीज़ प्रॉपर डेटा ये मिल जा रहा है। प्रभात सर, आपका पॉइंट है सर इसमें कोई? सर मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा, बोल सकता हूँ? हाँ सर, बोलिए प्लीज। हाँ सर, आलोक जी, इसमें ऐसा है कि जैसे आप पहला अपना सॉल्यूशन बता रहे हैं कि मैपिंग को लेके आपसे, तो वो तो एक जनरल सॉल्यूशन है, मतलब वो एक गूगल मैप और बहुत सारे 3D मैप, बहुत सारे मैप्स आ गए हैं आजकल, तो उसमें हम लोग टोपोग्राफी मैप बोलते हैं उसको। एक तरफ से वी कैन डेवलप कितना एरिया कहाँ से है, किस तरीके से क्या है। जो आप बता रहे हैं सेकंड की जियोलॉजिस्ट चाहिए, हाँ ये ट्रुथ है कि हमको फ्रैक्चर्स चीजें वो सब पता होना चाहिए। हमको डीप मॉडलिंग चाहिए, जैसे 3D मॉडलिंग, जिसमें हम लोग रिवर्स करें कि उसमें कहाँ से कितना क्या आ सकता है। थोड़ा स्टैंडर्ड मॉडल चाहिए उस चीज को लेके कि क्लिक किया तो फ्रैक्चर्स आ गए, उसके बाद रॉक फॉर्मेशन आ गई, रॉक फॉर्मेशन पे उसमें क्या हो सकता है, कैसे चीजें हो सकती है, कौन से मॉडलिंग कहाँ से हो सकते हैं, क्या आइडियाज ले सकते हैं, इस टाइप का। हाँ, तो इसमें जियोलॉजिस्ट और थोड़ा क्वाइट नॉलेज तो आपको चाहिए, बेस नॉलेज की उन चीजों को लेके, ये इम्पोर्टेंट है। किस एरिया की मिट्टी जो है रॉकी है, किस एरिया की मिट्टी भुरभुरी है, इधर से जाने पे लैंड। मिट्टी तो देखिए, मिट्टी का समझना अलग होता है, वो टेरेन अलग होगी। यहाँ पे पहाड़ों पे आ जाता है डेब्रीज एंड रॉक। डेब्रीज आप समझते होंगे, डेब्रीज मतलब जैसे एक तो होता है पूरा रॉक, पहाड़ पत्थर होता है, पूरा का पूरा हमारा पहाड़ पत्थर खड़ा होता है, लाइक लद्दाख में जो। फिर उत्तराखंड में देखा होगा आपने, छोटे छोटे पत्थरों के साथ मिट्टियां, और हिमाचल में जो होती है पहाड़ गिर जाता है क्योंकि ट्री की वजह से वो सब सॉलिड होते हैं।
डेब्रिस होता है, जब पहाड़ बनने के बाद जो बच जाता है वो डेब्रिस बचा रह जाता है। तो डेब्रिस एरिया बहुत टनल को नुकसान करता है मोस्टली, और रॉक में तो रॉक कट जाती है इसलिए वो स्ट्रांग भी रहती है। तो सॉइल का थोड़ा फॉर्मेशन तो रहती है, सॉइल कैसी है क्या है, बट डेब्रिस और ये रॉक, तो रॉक की समझना, कौन सा ग्रेनाइट है, मेटाफॉर्मिक है, वो समझना बहुत जरूरी है। That's it, sir. Okay from my side. So, gentlemen, thank you so much for your attendance for this particular challenge. We'll be taking on the second challenge now, that is challenge number 32, construction of roads in moraines and glaciated terrains under permafrost conditions. So this is the second challenge which is there, challenge number 32. So we can discuss this. So may I know who is the nodal officer in this, Mukul? Mukul, can we request the nodal officer to just connect and say hello to us so that we can take it forward? Sir, one thing I wanted to ask, that can we apply for multiple problem statements, or we have to apply only for one? You can apply for all the problem statements listed, right? No issues and applications. The only Okay. thing, and even for selection also. But finally, when you get selected, like suppose you have not ever applied, this is the first time you're applying to IDEX. So only five challenges you can take on. That means five places is where you can sign the agreements. 5 agreements. If let's say you have won all the challenges, you have applied for all, let's say 100 challenges are there, you applied for all the 100 problem statements, and 100 problem statement, you are the winner. But we will not will not sign the agreement for all the 100. Only 5 options will be given to you. You have to choose from that. I'm telling you the best case scenario for you. You got? I hope everyone understood what I'm trying to say. Yes, I got it, sir. Thank you so much, sir. Yeah. And There is no after embargo on application. Just go ahead and apply. And we encourage you to apply. Right? Yeah. Yes, please. Any other thing? Mukul, may we request that the second problem statement, the nodal officer can at least say hello so that we can connect and start. Okay, fine, sir. Yeah, good morning from Project Yojak, is it? Hello, we can see you. Can you Good morning, introduce sir. yourself, please? Yeah, good morning. Can you Yes, sir. just introduce yourself? Sir, I am Arnav Chakravarti, sir, Executive Engineer from Project Georgia. I am the nodal officer for this AI-based system to develop a digital elevation model of the areas to work out various tunnel alignments. Yeah, in fact, this is what we were discussing so long. You were not available. We 11 o'clock it started, and we just finished this. Sorry, sir. Actually, I had another meeting, sir. That is sir, why. there is too much echo in his voice, so can you please One more ask? thing. Your Mr. Chakravarti, you told, is it? Yes, yes, sir. Your voice is highly echoing. I request, could you come a little closer to the mic and speak? Your voice is echoing. We're unable to hear you clearly. Just wait, sir. Just wait, sir. Sir, is it audible now, sir? Very clear. Yes, sir. Sir, I Fine. am the nodal officer for this. Yeah, there were a number of Yes. questions. In fact, by the startups here,
but Yes, sir. pinpointedly, we wanted somebody like you to answer this. And in fact, Sir. your commitments, you were away. Yes, sir. So any particular requirement, you can just spell it out right away. Sir, actually, we have already submitted the FAQs. There are basically 14 number of those. Firstly, sir, the basic purpose of this AI-based tunnel alignment planning. And secondly, sir, how does AI-based system create a digital elevation model, sir? We need to know it. Then, sir, what will be the advantages for this? Whatever procedure that we are following for this digital elevation model, currently we are following, and how this DEM will help us, and then what type of data are needed to develop this DEM, sir. Then how does the system handle the challenges associated with the higher terrain, sir? Because, sir, whatever tunnels that we are handling currently is in the high altitude area, sir. That is in the fragile Himalayan terrain, sir. Such as steep slopes and rugged landscapes. So how will the AI-based solution handle all these challenges? Then can the AI system suggest the best tunnel alignment based on this digital elevation model, sir? Because general practice is, sir, we select different tunnel alignments and then choose the best one. So will it also be done through this AI system automatically, or human intervention are required, sir? Then, sir, what will be the accuracy of this DEM system, sir? Then kind of outputs that the users can expect from this AI-based system. Then, sir, how does the system integrate with other engineering and planning tools, sir? Those are required during construction. Then what support and trainings are available for this, for the users that will be available for this AI-based system? Will be using this. Then, sir, how can an AI-based system improve the accuracy and efficiency of creating a DEM for construction planning? Then, sir, how does AI help in assessing construction costs and time, and what will be the input parameters? Then, sir, how does AI help in assessing the rock mass characteristics of the area? Because the rock mass characteristics is the most important thing for tunnel alignment and tunnel construction. And what will be the input parameters that will be required for assessing the rock mass characteristics in this AI-based system? Then, sir, how does AI help in assessing the geological and geophysical properties of the strata, and what will be the input parameters? Because, sir, currently also with very high overburden and very means variable strata in Himalayas, currently to assess the geological and geophysical properties, we basically have to do the geological assessment during the tunnel constructions with this NATM method. So how this AI system will help us in this? That's all, sir. So Chakravarti, Yes, sir. just a minute. The thing is, the number of questions that you have posed are similar to the ones the startups are also asking, right? Broadly, what I understand is, see, you want a system, a digital elevation model, which is integrated with AI, and AI solves much of your problem, right? And you also wanted Yes, to sir. know, will that be giving a decision? Please understand that ideally the decision should be made by the human in the loop rather than the model themselves. It will give the data, they will give the best alignment. The AI will enable you to help and give the best of the alignments. Finally, the best things, which is best for you, has to be chosen by the human, right? Who is there in Sir. chain of command to be taking the final alignment? Yes, this is the best, right? The final thing, the call has to be taken by the
person himself. This will all assist So means, you in taking that decision. so means what will be the input parameters, sir, that will be required? Yeah, input parameters and all. Let any of the Mr. Ravi or anyone can take on this. नमस्कार चक्रवर्ती सर, मैं रवि मटोलिया। हम लोग जियोलॉजी और Yes, हिमालयन नमस्कार जी। जियोथर्मल पे काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया, यू वांट सो मच ऑफ मॉडलिंग थ्रू विद द हेल्प ऑफ एआई, बट इसके लिए हमको एआई डेवलप करने के लिए वी हैव टू collect 3D data. 3D data is geological, geophysical and geochemistrical some ways. बिकॉज अगर जियोफिजिकल के लिए आपको जाना है, जियोफिजिकल डेटा जैसे आप बता रहे हैं, एआई मॉडलिंग और सब चीज़ों के लिए, तो हमको एआरटी, डीजीबीआर एंड कुछ जगहों पे हम लोग शॉर्ट एमटी भी कर सकते हैं, ईआरटी एंड एएमटी। दे आर मोस्ट जियोफिजिकल सर्विस जिसमें हमें अच्छे से 3D मॉडलिंग मिल जाती है। आई डोंट नो बीआरओ इस पे यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। ईआरटी कुछ जगहों पे बीआरओ ने, जैसे आपका ये जो आदि कैलाश वाला रूट है वहां पे तो किया था उस जगह पे। आई डोंट नो यहाँ हिमाचल एरिया पे वहाँ क्या कैटेगरीज है, बिकॉज इन सबको सर्वे करने के बाद जब हम लोग जियोलॉजी जियो टेक्निकल सर्वे कर लेते हैं, एरिया की रॉक फॉर्मेशन फ्रैक्चर सब कुछ कर लेते हैं, देन वो डेटा मिलता है, देन वो हम लोग एआई सॉफ्टवेयर में डेवलप डालते हैं कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं, ये इफ एंड बट्स हो सकते हैं। तो वो बनाने के लिए इनिशियली हमको बहुत सारे सर्वे करने होते हैं, एंड कुछ सर्वे हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप उसमें, जैसे हम लोग स्टार्टअप है तो हम लोग बहुत लोग कोई नहीं सुनता है, जहाँ डिफेंस आ जाती है वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो अगर आप इस पे डिस्कस करें तो हम लोग बहुत अच्छे से इस पे काम कर सकते हैं सर, इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है सर। वी कैन डू इजीली सर विद द हेल्प ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट। हम लोग इंडिया में हिमालयन कैट जियोलॉजी के बहुत लोग हैं, हम लोग कर सकते हैं सर। ओके सर, ओके। इसमें फिर मीन्स द एंड रिजल्ट विल बी द बेस्ट सुइटेड अलाइनमेंट सजेस्टेड बाय एआई, राइट? यस यस, हाँ, वो परफेक्ट आएगा। आपको एक्यूरेसी जितना, देखिए सर सिंपल है, जितना सर्वे आप अच्छे से करोगे उतना एक्यूरेसी आपको अच्छे से मिलेगी। अगर हम सर्वे ही अच्छे से नहीं करेंगे, सर्वे अच्छे, जियोलॉजिकल सर्वे अच्छा नहीं होगा, रॉक फॉर्मेशन अच्छे से नहीं पता चलेगी, फ्रैक्चर्स कहाँ है, शैलो शैलो वाटर्स भी। अब जैसे एक हमने मॉडल बना दिया, हमने उसमें शैलो वाटर भी डाल दिया कि शैलो वाटर एरियाज भी कहाँ कहाँ पे है, टनल की रॉक भी क्या है। तो अपने आप एक एआई अपने आप खुद एक आपको टनल डिजाइन बना के दे देगा, आपको टेंशन, आपको मेहनत ही नहीं होगा। आप सब सर्वे कर दोगे। आप लेट सपोज, अब सिंपल है, आप खाना बनाने के लिए अगर सब कुछ दे दोगे तो खाना अपने आप हम बना, कोई भी बना लेगा सर। जब चीजें नहीं होगी खाना बनाने के लिए तो सर कैसे बनेगा सर। ओके ओके, गॉट इट। एंड फॉर ये रॉक मास क्लासिफिकेशन भी मतलब आपका सिस्टम इसमें कुछ इनपुट देंगे? सर एक्चुअली हमारा जो स्टार्टअप है, हम लोग जियोथर्मल पे काम कर रहे हैं, जो अर्थ की हीट होती है, जो गर्म पानी, इन सब पे जो अगला 32 जो चैलेंज है हम उसी पे ही मोस्टली काम कर रहे हैं। यस यस। तो इस वजह से हमको जियोलॉजी और हिमालयन का, हम लोग हिमालयस पे ही काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा नॉलेज है। और मेरे साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एनजीआरआई, जो हैदराबाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमने इन सबसे कोलैबोरेटेड हैं सब वर्क के लिए। तो एक अच्छे गवर्नमेंट साइड, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मल्टीपल, तो वी हैव अ गुड टीम सर, वी नो कैसे होता है, क्या होता है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। So anything else from any of the startups or from the nodal on this subject? No sir, thank you sir. Yeah, so startups, I guess everyone broadly got to know. Basically, if you understand ki what this is required for, you will find ki what is required by the user, end user. You try and craft it according to that. Yes, as mentioned by Mr. Ravi, there are certain input data and other things which are required that the border roads has to help out. All right, and in case they are not able to help out, they can pinpoint the agencies through whom they can be got.
For example, if they want some high resolution data or some satellite imageries or something for this, right, to show us, yes, this is how our model works, you need to have some input data. Generally, you open on an open source, work on an open source, whatever data is available on open source, try and work through that, try and show them, yes, this is how it is. I'm talking about you are a winner and you've signed an agreement subsequently, right? And if that is so, and if at all you're not able to get, so there are a number of agencies who do that. Ministry of Fishery is there, Forests is there, ISRO is there. Likewise, number of agencies are already doing certain things. Some data and other things can be got from there. So some data and some things you may have to purchase on your own and prove it. Okay? And some other things which will be provided free of cost. So that needs to be seen which will be free of cost and what needs to be bought. Okay. But since if you are a winner, obviously the government is funding 50% of the cost. So some of the things are taken care of yours. Yeah. Anything else from anyone? Hello. Am I audible? Yes, sir. Nothing, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Fine. I just thought ki am I cut out? Okay. Now let's move on to the second problem statement. I would request all the nodal officers who have already been for this to stay put, because the second problem statement is also in line with what you're doing. It is construction of roads in permafrost conditions in glaciated terrains, right? How that can be taken, what, right? I'll just read through the problem statement, what it is. The problem statement says construction of road over moraines, permafrost, oblique glaciated areas. In this challenge brief, they tell Border Roads continues to construct roads in super high altitude areas along India's northern borders where the ground is underlain with permafrost oblique moraine glaciers. The alarming pace of climate change in recent years has triggered repeated cycles of freezing and thawing of permafrost, because of which natural subgrade has become unstable, causing damage to the existing roads and preventing construction of new roads in such areas. The challenge is to either find innovative means to establish the subgrade and develop technology for construction of roads over permafrost oblique moraine glaciers. I hope everyone could hear me, right? I'll give you a simple example. Let's say there is a high mountain pass. You are crossing over from Himachal Pradesh to Ladakh. If you understand Himalayas, the ranges are running. There is something called Pir Panjal ranges. There is something called Great Himalayan ranges, the Ladakh ranges, the Zanskar ranges. So these are mountain ranges which are running across from left to right. That is to say, from the northwestern side to the southeastern side, it is running like that. Okay, covering over hundreds and hundreds of kilometers. So when you want to cross from down south, if you want to go over, because our terrain we have to occupy, our forces have to occupy, there are our own people living on the other side. So how do you connect? Roads are the best connectivity. But these roads have to cross over a particular mountain pass, which are remaining in a very state of permafrost condition. That is, they are glaciated. You find glaciers and cold mountains that they are crossing. What's happening lately due to the climate change? The temperatures are increasing, and in winters the temperature are going down. So there is expansion due to heating and contraction due to the cold conditions. So ultimately, what roads have been constructed, they are developing cracks, they are sinking, and plus the land is also in such a state. So what solutions can we give to border roads so that a road can be constructed on this sort of a terrain itself, or we resuscitate the existing roads to a state wherein it is possible that normal connectivity is existing? So I hope I have made myself clear in this. Nodal officers can, if you want to add on something, you can add, right? Uh, um,
Mukul, anything kindly add on if you wish to add? No, sir, it's all problem we have discussed, sir. Main problem of sinking of highways in such areas and cracking of road surface, failure of road surface. These are the main challenges we encounter. Yeah, so you got most of you who love traveling, love Himalayas. I'm sure once if you have visited Himalayas, you would love to go again and again. And you would have traveled along the roads. You would have seen how the roads get cracked. The one side of the walls, they are falling apart and going down, right? So these are the challenges currently we are the and moreover the roads which are existing earlier were all single lane. Now we are going into double laning, four laning of the roads. So the more the activities, the more we try and touch the nature on the wrong side. Actually, these are the problems we encounter. We can't help it because our forces have to be on the other side. We are surrounded by countries like China and Pakistan on one side, wherein we need to have our we need to provide security to our own people who are staying along the borders, right? So road is the most important connectivity, and the quality of roads, I'm sure you would appreciate. Everyone expects the best quality roads, and how it can be provided is these sort of solutions are required so that the border roads or the National Highway Authority of India or NHIDCL or PWD, whoever is working in these fields, they are supported by the right technology or innovations so that the best quality roads are produced. So that's the aim of this particular challenge. In how do we construct the best quality roads so that they are not prone to this sort of thing, they don't crack or they don't start sinking. Our roads have to be constructed in such things, or if they're already sinking, how to resuscitate the so these are the things this challenge pertains to that. So anybody has questions pertaining particularly to this, kindly may come up with this thing. बेसिकली सर जो हिमालय या बॉर्डर्स एरिया में आपका जो रोड है उसमें बीच में जो क्रैक्स आ जाते हैं या गड्ढे हो जाते हैं, उनके लिए आप चाह रहे हैं कि कोई बेटर इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन हो कि वो क्रैक्स जल्दी ना आए, करेक्ट? अगर ऐसा है, हेलो, करेक्ट सर? नहीं, सुनिए, आप जो बोल रहे हैं क्रैक्स वगैरह तो रोड्स में आती हैं फॉर वेरियस रीजन। हम बात कर रहे हैं परमाफ्रॉस्ट कंडीशन। आप अगर देखेंगे, रशिया है, रशिया के गांव है, वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट विलेजेस आर देयर, याकुत्स्क वगैरह, जहाँ टेम्परेचर -70 -80 डिग्री जाता है। तो वो ग्राउंड जो है ना ऑलरेडी फ्रोस्टेड कंडीशन में, जैसा आपके फ्रिज में आप फ्रीजर खोलते हो उस कंडीशन में जो जमीन है। बट जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है तो वो जो पिघल रहा है आइस, उसके कारण धरती धंसती भी जा रही है, कट रही है, टूट रही है। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है, इनको हम कैसे टैकल करेंगे? हम नॉर्मल यहाँ पे दिल्ली बॉम्बे की कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिमालय में रोड जो उस कंडीशंस में है उस चीज की बात कर रहे हैं। हाउ डू वी डू दोज थिंग्स अंडर परमाफ्रॉस्ट, अंडर ग्लेशिएटेड कंडीशंस, अंडर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, हाउ दीज रोड्स कैन बी सस्टेन्ड टू कंस्ट्रक्ट देम, वो उसकी बात कर रहे हैं वैसे। वो तो सर फिर तो एलिवेटेड मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी के टाइम में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ठंडी में बर्फ वहाँ पे जम जा रहे हैं। तो अगर आप मतलब बेस अगर सॉइल पे अगर बनाते हैं तो फिर ठंड के दिनों में ऊपर बर्फ आ जाएगी, और अगर आप बर्फ के ऊपर बनाते हैं तो गर्मी में बर्फ पिघलेगी, तो फिर नीचे में वैकेंट स्पेस होएगा। तो इसको तो एक तरफ से एलिवेटेड मॉडल ही पे ही बनाना पड़ेगा, नहीं, आप एलिवेटेड आप टाइप में। आप ये समझिए कि कोई भी बर्फ पे रोड नहीं बनाएगा, रोड हम्म बनेगी जमीन पे ही। आप हम्म आप जानिए कि ये जो जमीन है ना, जो आपको दिख रही है ऊपर से जमीन की तरह दिख रही है, इसके नीचे की लेयर, अंदर अंदर की काफी सारे लेयर हैं जिसमें आइस जमी हुई है या कुछ है जो पिघल रही है, उसके कारण धंस रही है जमीन। गॉट इट? हम्म सो ऐसा है। आप तो रोड ऊपर ही बनाया है, सही है, बट कहीं किसी फॉल्ट के कारण जहां जहां पे था वो पिघल गया, वो गैप्स क्रिएट हो गई, अचानक प्रेशर एंड फोर्स के कारण वो वहां धंस गई, राइट? सो ऐसे है, ऊपर हाई हिमालयस में ऐसी कंडीशंस हैं। काफी जगहों में आप देखोगे अचानक रोड ठीक चल रही है, अचानक एक रोड धसी हुई मिलेगी, फॉर सम टाइम यू गोइंग लाइक दैट, एंड अगेन एंड द रोड बिकम्स नॉर्मल।
Likewise. All right. तो हमारे पास ऐसे ब्लॉक्स हैं ब्रिक्स के जो कि स्ट्रेचेबल हैं। बाकी सब जो नॉर्मल ब्रिक्स यूज होते हैं ये टूट जाते हैं, बट हमारे पास जो ब्रिक्स हैं तो ये उस पर प्रेशर पड़ने पे थोड़ा बहुत टेंसाइल होते हैं, ठीक है, लाइक स्टील, स्टील और रबर टाइप एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर हम इसको भी यूज करते हैं तो इसका भी तो एक लिमिटेड होगा ना, स्ट्रेच करने का कैपेबिलिटी है। तो अब जैसे बता रहे हैं कि एकदम से धंस जाता है, अब बड़ा एरिया अचानक से धंसता है, तो फिर वहां पे तो ये भी सस्टेनेबल नहीं होगा सर। नहीं, आप समझिए कि हम बहुत बड़ा लैंडस्लाइड की बात नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल ही जाकर धंस जाएगा, ये नहीं कर रहे हैं। क्रैक्स आती हैं, धंसती हैं, कुछ लेवल नीचे चले जाती है, राइट? अंडुलेशंस आती हैं। आप देखो, अगर आपका अचानक और सीधी रोड में पूरी तेजी से जा रहे हो, अचानक एक स्पीड ब्रेकर आ जाए जो आपको दिख नहीं रहा है, राइट? और अचानक एक पॉट होल आ जाए, दिख नहीं रहा है, तो कैसे आप फील कर रहे हैं? पहले तो हम लोग सब यूज्ड टू थे, बिकॉज रोड्स के कंडीशन ही ऐसे थे, टूटे फूटे। और अभी तो रोड्स, अच्छे रोड्स आ गए हैं, हाईवेज बन गए हैं। वैसे ही है कि ऐसे चीजें जो अचानक आ जाती हैं बीच में, जो टूट धसी हुई, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, दिस इज ऑफरिंग, इसमें एक्सीडेंट्स भी बहुत होने के चांसेस हैं, राइट? किसी को पता है कि आगे रोड टूटी हुई है तो वो अचानक पहले ही स्पीड स्लो करके आएगा, अच्छा सर, राइट? करते हैं। Yeah, yeah. Please, I request border roads to take on, because they are the people on ground. They can take on and they can amplify what is required, please. प्लीज प्लीज। There's a main problem of subsidence of roads at number of places. As you told, the road is straight. There's no problem in drains both side of the road also, but still you will find subsidence in the road surface, sinking and undulations, uh, differential settlements in the road. So a lot of problems in the road. And what is the main problem? This is due to permafrosting. How to overcome this problem? This I want solution from the people. Hello, sir. Hello. Yes, Mr. Hello. Suresh, please go ahead. We can hear you, Mr. Sir. Suresh. Please go ahead. Okay, sir. Thank you very much, sir. Sir, I want to, want to clarify something that border road organization needs some technology for the material, or they want to create the roads. Here, the construction of the roads is with the border. I mean, border meaning. So we want to just supply the innovative materials, or just want to construct the roads, because this No, is no, the we want problem. solution. We want solution to this problem. How to overcome this problem? The differential settlements all along the road. You will not be able to speed beyond 30 km per hour. This is the kind of condition. All right. So basically, BRO wants some materials, innovative materials for this problem. No, material is fine. There is no problem of material. Road is as such. There is no crack. There is no failure of the pavement layers, but there is sinking. This may be due to the uh, uh, Permafrost. upgrade or like that. So why this Right, happens? sir. How to make this subgrade stable and construct the road? Right, sir. Right. मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? Yes, please. सर आई गेस प्रॉब्लम है फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, गर्मी और ठंड की, रोड्स की। और हमारे पास इस पे सॉल्यूशन है सर। हम लोग इस पे पिछले काफी टाइम से काम कर रहे हैं। इसी एक ये हमारा एक पार्ट कह सकते हो हम लोग, क्योंकि जैसा आपने बताया हाई ऑल्टीज रोड्स हैं, आपका काफी सारी रोड्स हैं वहाँ पे, कुछ हाई पासेस पे पूरी परमाफ्रॉस्ट, और कुछ बोगरा गलवान वाले, ससुमा वाले, पानमिक जंगलों वाले एरिया पे सब जगह पे काफी प्रॉब्लम है सर उन सब जगहों पे ऊपर। सो व्हाट वी कैन डू सर, हम लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं कि हम लोग आपको टेम्परेचर सप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड हीटिंग। So this is the only solution for to solve the permafrost challenge, sir, all over the world. It's called district heat system, sir. With the help of heating, we can supply us only a simple temperature. एक ही constant temperature उस पे हमेशा रहेगा, जिससे वो बर्फ उस पे जो रहेगी उसको डी आइसिंग ऑन हाईवेज पे कह सकते हो आप।
एक तरफ से, या बर्फ उस पे जैसी आएगी वो कुछ घंटों बाद पिघल जाएगी और एक ही फॉर्मेशन रहेगा। सर इनका बेसिक ये है ना कि जो बेस लेवल पे, जो बेस ग्राउंड पे रोड पिचिंग करते हैं ये, तो एक टाइम के बाद में क्या होता है, वो जो पिच है ना उसके नीचे जो 2-3 लेयर के नीचे जो बर्फ रहती है वो खिसकने की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आता है। करेक्ट सर? एक्चुअल प्रॉब्लम यही है ना? हेलो, आप मेरे को बोल रहे हैं? मैं इनसे कंफर्म कर रहा हूँ कि एक्चुअल हाँ, प्रॉब्लम यही है प्रॉब्लम ना, यही है, आप कह सकते हो परमाफ्रॉस्ट और ग्लेशियर में 3 यही लेयर काफी। के नीचे जो बर्फ है ये पिघल जाने की वजह से जो है पिच जो है ना, जो ग्राउंड पिच है वो डिफॉर्म हो जाता है। आपने वो आइसक्रीम सी देखा है कभी? जब वो बर्फ वाला आइसक्रीम हम खाते हैं वो एकदम सॉलिड रहता है, जब वो पिघल जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कैसे फ्रैक्चर्स बनने लग जाते हैं, अपने आप टेढ़े मेढ़े आइसक्रीम गिरने लग जाती है। तो सर आप जैसे बता रहे हैं कि नॉर्मल कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करेंगे तो आप सरफेस लेवल पे प्रोवाइड करके ऊपर से जो स्नोफॉल आ रहा है आप उसको हटा पाएंगे, बट मैंने तो यहाँ सरफेस बोला ही नहीं, ऑलराइट। मैं तो अंदर की बात कर रहा हूँ। हम लोग कहीं भी उस टेम्परेचर को डाल सकते हैं। क्या टेम्परेचर सस्टेन रहेगा अंदर में, या वो भी फिर सर हम लोग आपको कांस्टेंट 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर दे सकते हैं थ्रू आउट द ईयर? थ्रू आउट द ईयर। तो क्या उसमें एप्लीकेशन रहता है? सर क्या एप्लीकेशन आप लोग करते हैं? सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा सर। क्या आप लोग करते हैं, मतलब हाउ, कैसे प्रोवाइड करते हैं उसमें टेम्परेचर? I guess this is not a good platform to ask answer this question, Why? sir. सर ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, सॉरी सर, मैं ओपनली नहीं बता सकता। आपको ओके। आपको बता सकते हैं बट ऐसे सब नहीं बता सकते सर। आपको इसमें सर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हमें कुछ उसमें स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने होंगे इंटरनली, जो कि कुछ सिस्टम जो है इंटीग्रेट करने होंगे, जो कि अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो उसको डाउन करेगा और एक लिमिट से कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर आपको 25 का हमेशा चाहिए तो इन केस अगर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री हो रहा है तो ये उसको रेज करके 25 ले आएगा, और इन केस अगर आपका 35 जा रहा है टेम्परेचर ड्यू टू वेदर, नॉर्मल वेदर, तो ये उसको डाउन करके 25 लेकर के आएगा। जो आपका 25 आपका है वही आपको हमेशा रोड का ये टेम्परेचर आपका फिक्स्ड रहेगा। इम्प्लीमेंट है। See, I This guess is clear, sir? the interactions which are going on, it's perfectly fine that you know what is the problem here, right? तो these इसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस एज यू मेंशनिंग, ठीक है, आप जैसे बोलो कुछ भी, कोई मटेरियल हो गया, जो भी हो गया, बट व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग द रोड विद दैट सॉर्ट ऑफ अ मटेरियल और समथिंग, इवन आपकी जो ग्राउंड अगर सिंक हो रही है, लेट्स से अभी मैं जो परमाफ्रॉस्ट कंडीशन जो बता रहा हूँ ना, मैंने बताया रशिया की एक जगह है जो दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट है, वो पूरा सिटी बिल्ट है उसके ऊपर, कंक्रीट के पाइल्स के ऊपर बिल्ट है सारा, ठीक है। अब आप नीचे हंड्रेड्स ऑफ मीटर जमीन के नीचे देखेंगे, पूरी एक लेयर जो है कंप्लीट, वो जो सॉइल कंडीशन है फ्रोजन है कंप्लीटली, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अंटार्कटिका, और ऐसे आप कंपेयर करेंगे ना तो दोज कंडीशंस वैसे हैं कंडीशंस उधर, ठीक है। तो वो फ्रोजन कंडीशन में ही रहती है बॉटम में, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स बीनीथ द ग्राउंड देयर इज अ कंप्लीट फ्रोजन सॉइल विच इज देयर। अगर वो सॉइल अगर डीफ्रीज होगा या वापस गर्मी के कारण मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर की जमीन धंस जाएगी, समझ गए ना। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे एट दिस लेवल्स, एट द हाई एल्टीट्यूड, दिस कीप्स हैपनिंग रेगुलरली। सो वी वांट, उसको तो हम रोक नहीं सकते, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण परमाफ्रॉस्ट कंडीशन में वो मेल्ट होगी, जमीन धसेगी, बट जमीन धसने के कारण भी हमारी रोड ना धसे या रोड स्ट्रेंथन रहे या उतना डैमेज ना हो, हम कैसे मेंटेन करेंगे उसको? या ऐसी कंडीशंस के ऊपर भी हमें रोड बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे रोड्स, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको कि दैट इज सर सम ऑफ द इसके चैलेंज। लिए हम आपको 2 चीजें दे सकते हैं सर। एक जो हमारे पास स्ट्रेचेबल ब्लॉक्स हैं, या तो हम उसका यूज करें,
कि हल्का सा सिंक होने पे भी वो लाइक रबड़ ये जो है स्ट्रेच हो पाएगा, क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। पहला ये सॉल्यूशन है। दूसरा ये सॉल्यूशन है कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा, बट ये रोड का कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन ही हम अपना जो सिस्टम है उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी हमारे सिस्टम से इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या है कि आपने एक लैंड के ऊपर एक रोड का लेयर तो हो गया, अब ये जो है वो लेयर ऑलरेडी कवर्ड है रोड से, ठीक है। और ये रोड के नीचे का जो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रख रहा है, तो फिर अपर आउटसाइड का वेदर चेंज होने की वजह से ये जो रोड के नीचे का जो टेम्परेचर है वो तो फिक्स्ड है, तो उसमें उसका आइस का जो है मेल्ट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो गया। दूसरा ये आपके पास ऑप्शन है हमारी तरफ से। Fine, fine. तो See, everybody may have different solutions. Most different solutions are welcome. All right. तो आप जब अपना प्रपोजल देंगे, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, वेरी वेल। अब आप जब अपना प्रपोजल देंगे कि हाँ हिमालय में जो चीजें हैं, मेरे पास ये है, जो मेरा एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो मैं दे सकता हूँ, जिसके कारण आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो वो अगर लगता है बॉर्डर रोड्स को कि हाँ I think this solution is something worth testing, worth trying. तो you will be called for the selection, right? Shortlisting आपकी होगी, हम आपको देखेंगे. And if you are good enough, surely we will be signing the contract agreement with you, right? तो उस समय जब when we sign the agreement, at that time you may bring in your solutions and आपको प्रूव करना पड़ेगा जो आप बता रहे थे प्रपोजल में अपना, आप करके दिखा सकते हो, करके आपको करना है. Right, your the solutions that you're trying to provide. Maybe lab testing आपने प्रूव किया है, फिर आपने फिजिकली कहीं पे प्रूव किया है कि दूसरे जगह पे, एंड फाइनली आपको बॉर्डर रोड्स के उस लोकेशन में आकर आपको टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए आपकी इस कंडीशन में, आपने विंटर्स में भी देख लिया और समर में भी देख लिया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ये रहेगी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आपको उस वहाँ उस जो सर लोकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें अपने कॉस्ट पे ये सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह करके दिखाना होगा, देखो वही या है ना, फिर सरकार का ग्रांट भी तो आ रहा है इसमें। आपको इनिशियली जब प्रूव करना है कि आप सक्सेसफुल हैं, तो वो आप, आईडिक्स का मॉडल ही ऐसा ही है। अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, तो सब्सिक्वेंटली border roads will contemplate how to procure and how to do it, right? That action is separate. बट इनिशियली हाँ आपको ग्रांट, सरकार का ग्रांट इसीलिए मिल रहा है आपको। अगर सपोज 1.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट आपको दे रही है 3 करोड़ के अगेंस्ट में, या आपका प्रोजेक्ट ही, टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट ही 1 करोड़ है, दैट मीन्स 50 लाख तो सरकार दे रही है आपको। 50 लाख आप अपना लेकर आ रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ सोल्यूशन ऑलरेडी है। ऑल राइट, जैसे मिस्टर रवि हो गए, मिस्टर सुरेश हो गए, शालोक, सो मेनी पीपल आर देयर हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस फील्ड, यू हैव गॉट समथिंग विद यू। अगर आप इसी को रिफाइन करके बॉर्डर रोड्स के सॉल्यूशन दे सकते हो, ऑब्वियसली देन समथिंग कैन बी, रोड तो बनी रही है, तो दे सर, वुड ये लाइक टू ट्राई इट प्रॉब्लम आउट। स्टेटमेंट नंबर एक बार रिपीट कर देंगे सर? प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 32 है ये। 30। तो सर हमारे साथ 32 एक इशू, हमारा जो हमारे पास जो भी है, इसका अभी तक हम पेटेंट फाइल नहीं किए हुए हैं। नहीं, पेटेंट फाइल नहीं किया तो पेटेंट फाइल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पेटेंट नहीं किया तो नहीं कर सकते, नहीं है, आगे भी कर सकते हो, सो दैट आईपी आपके नाम पे रहे, वो आईपी प्रोटेक्टेड रहेगी। देखो आईडेक्स के साथ जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ये पेटेंट आपके नाम पे ही रहेगा, आईपी हम इंफ्रिंज नहीं करेंगे। जब भले ही सरकार आपको 50% दे रही है पैसा इसमें, बट ये सरकार ये नहीं बोल रही है कि अभी पेटेंट भी 50% हमारा होगा, वो नहीं बोल रही है। 100% पेटेंट आपका रहेगा, आपके पेटेंट छू नहीं रहे हैं हम लोग, आईपी राइट्स आपके पास ही रहेंगे, राइट? वेरी मच क्लियर सर। So I guess problem statements are clear. I I just had a few questions, sir. Sorry to yeah, Mr. Mani, बताइए। yes, sir. So regarding this problem statement 32, you had mentioned that the road is sinking. So do we have any information about how much is it kind of sinking? What kind of basically how much is the rate of sink, or how much is it sunk? Let's say, is it only a Yeah, couple of is it only about 15-20 mm? Is it 100 mm? Is it 400-500 mm? Some idea just to understand how much the permafrost is kind of creating a problem. no, settlement is to the tune of around 25 to 30 centimeter even. So the stage 10 meter, 12 meter like that.
and there's a stretch of road of around 20 kilometers. It is full of sinking areas only. What is the main problem? Okay. Every time we repair, but again, over a period of time, it sinks. Okay. So the sinking is about 25 to 30 centimeter every time that the Yes. incident occurs, and whenever we repair it, it sinks again. Yes. Mentioned the length also, sir. What was the length of the Length problem? around 20 kilometers. But not 20 kilometers consistently, right? Matlab in small patches. Yes, in patches, yes. So what is the about maximum length of the patch? Just to get It's another around idea. 10 to 12 meter maximum. Okay, only 10 to 12 meter patches are there. All right, Yeah. that's good. Second thing is, sir, since we're talking about permafrost conditions, I just wanted to understand what is the minimum temperatures over there and what is the maximum temperature over there in these kind of locations that we are talking about. Minus temperature to goes by minus 35 degrees Celsius, and Okay. the maximum temperature up to 25, 26 degree maximum during daytime. Okay, so during daytime in the summers it goes up to about 25 degrees, and Yes. minimum temperature is minus 35. During winters, during During daytime, winter, night time. minus is 35, and okay, winter it's 9, 10. Okay, that's good. Yeah. All right. And what is the traffic design that we typically go for? Matlab, Traffic is what not that much, 1 MSA Nahi, maximum. Mr. Somani, I'll tell you about the traffic. Traffic density, if you talk about, it's not much. But what sort of a traffic, if I tell ki if the military is going to use it, they will be Yeah. taking a tank on that, on a tank trailer, right? Yes. Right, sir. Heavy vehicles rely on that. So don't confuse these two. I hope I'm adequately clear on this, right? Yes, you are, sir. So there are different classes that are there in the, I think, military system. What class roads are we building over there? Not in MSA, but in terms of class. Like you said, if tanks are moving, then Bridges normally cost 70 R. sorry, 70. Class Class 70. 70, you must say class 70. Yes. Yeah. Okay. All right. Class 70 roads is minimum design that we're looking for. All right, sir. Okay. I think I've got the inputs that I wanted. Thank you so much, sir. So, gentlemen, broadly, you got a hang of it. Just appreciate border roads is from 1950 51 onwards when it is raised. How our people have constructed roads, you would be amazed to see. Today also, you will be amazed to see how the roads are constructed. Much before, just imagine in 1960s, 70s, those times, there were very limited technology, limited connectivity. People had worked so hard and built roads there and all, right? Now the thing is, with the forward-looking posture and our adversaries which are there on the forward, we need high quality, good roads so that our military or even for our civilians and our tourists are able to access those places, forward areas, right? So it's got a multiple, unlike people that didn't used to travel so much, it was restricted, only military used to be using or only the villagers used to be traveling those. Now it's a whole lot of people are traveling and roads are opened up to the even the forwardmost posts. So these sort of technologies, tunnels, bridges, so many things are being constructed with the foreign collaborations also undertaking at these places. All right. So we want the startups to come up with solutions to such day-to-day problems which border roads face. All right. So that even in such extreme conditions and those forwardmost areas, when somebody drives, they should feel, yeah, somebody has done such a wonderful job
I'm feeling as if I'm driving on a Bombay Pune highway or something like that. All right. So obviously that's the aim of border roads, to give the best quality roads to any user who is on that. So I guess most of the queries have been cleared, and you understand to whom you're giving the solutions for. So kindly align your proposals to that. And please, for I tell you, some people say that I had submitted a proposal, but why I am not being shortlisted, why I have not been shortlisted. Let me tell you, it's like a question paper given to you, but answer sheets, only the person who's correcting sees the answer sheet. Every student feels that I did my best, but somebody who's correcting, he knows ki what was asked for and what has been answered. All right. And how well it has been answered. So in case you want to make a mark or want to ensure that your shortlisting is done, make a clear cut proposal based on what is wanted. क्वेश्चन स्टेटमेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास सॉल्यूशन है उसके हिसाब से प्रपोजल बनाओ. आपका सॉल्यूशन, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो यूजर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व कर सकता है उसको कनेक्ट करो आप. राइट. वैसे प्रपोजल बनाइए, लिंक्स दीजिए. आपके जो रिसर्च है, प्रपोजल रिसर्च आपने जो किया हुआ है, या आपकी कोई आईपी वगैरह डाली है आपने कुछ इस पे, वो सब भी आप कोट कीजिए, ताकि पीपल हु आर शॉर्टलिस्टिंग हियर और सीइंग दैट, दे हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू, ऑन योर स्टार्टअप, दैट यस, नाउ वी कैन हैव दिस, वी कैन, वी वुड लाइक टू हियर यू. ऑलराइट. तो आपने अगर प्रपोजल डाला है तो इतना अच्छा बनाइए कि आपका शॉर्टलिस्टिंग 100% हो उसमें. बाकी सिलेक्शन होता है नहीं होता, दैट इज सेकेंडरी. एटलीस्ट शॉर्टलिस्टिंग आपकी होनी चाहिए. और हर एक आदमी जो यहाँ पे सुन रहा है, आई वुड एनकरेज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अप्लाई फॉर दिस. डोंट हेजिटेट इन एप्लीकेशन. राइट. या So before submitting our reports, can we connect you to check that once? no, please, Mr. Alok, I do understand what you're trying to come to, but checking would not be feasible, because क्या होता है ना, चेकिंग तो तभी होगी जब आपकी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी. आप अगर हमारे को पहले दिखाओगे, देखिए कि हम सही बोल रहे हैं, फिर आप सबमिट करोगे, वो तो बन नहीं पाते. उतना टाइम भी नहीं है किसी के पास कि हम चेक करते रहें प्रपोजल्स. हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं. ये तो एक चैलेंज है, ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस हैं. और ये रूट होती है हमारे थ्रू, आप डायरेक्टली बॉर्डर रूट्स को नहीं दे रहे हैं. आप आईडेक्स के पास एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ऑनलाइन में है, हमारी डेट फिक्स्ड है. ये जैसे आईआईटी जेई और इनका पेपर है ना, उसकी तरह है. ऐसा नहीं कि आपकी डेट मिस हो गई तो आप 11 तारीख को 12 तारीख अप्लाई कर दो, 13 तारीख नहीं, या ईमेल में एप्लीकेशन भेज दो, नहीं. आप पोर्टल में अप्लाई करेंगे तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी. अगर वो उतने टाइम 5 बजे या रात के 12 बजे का टाइमलाइन है लास्ट टाइम, उसके बियॉन्ड आपने 1 मिनट भी किया, आप एक्सेप्टेड नहीं हो गए, वो क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन विंडो. सो प्लीज बी, आप बहुत सारी क्वेरीज मेरे को आते हैं, बहुत ईमेल्स आते हैं, आई कांट हेल्प यू बियॉन्ड दैट. सो आप टाइमली पोस्ट कीजिए, डोंट वेट फॉर लास्ट डे. लास्ट डे क्या है, संडे है, संडे मंडे आएगा, जो भी है. सो डोंट वेस्ट फॉर द लास्ट मिनट, जस्ट ट्राई एंड डू इट बिफोर. ओके. एंड गिव इट अ होलिस्टिक सॉल्यूशन. हाँ सर, एक्चुअली ये एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, जिसकी वजह से एक ये होता है ना कि हाँ कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी या फिर कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डल जा रही है. जस्ट इस चीज़ को लेकर के हम पूछे कि किसी से प्रिस्क्राइब्ड कॉल. फॉर्मेट का ये है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ना उन लोगों के लिए है जो, अभी तो आप तो इनोवेटर्स हैं, हम तो इनोवेटर्स और उनके लिए बात कर रहे हैं, हु आर पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स. आपके आइडियाज इतने, यू आर पीपल हु थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आपको अगर हम सिर्फ इसी 4 कोने के अंदर आपने खेलना है बोलेंगे तो मुश्किल है ना. करेक्ट, करेक्ट ठीक सर, है. सो वी हैव गिवन ऑप्शंस, तो आप जैसा खेलना चाहें वैसा खेलिए. आपके लिए हमने रूल्स रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं. बट यस, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपका प्रपोजल, सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट है. उसमें क्लिक कीजिए, उतने एमबी के अंदर में आप अपलोड कीजिए उसको. ठीक है. प्लीज एंश्योर दैट योर प्रपोजल्स आर ऑन दैट. आपके फोटोग्राफ्स हैं, एनीथिंग यू वांट टू गिव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनीथिंग, इट हेल्प्स अस टू शॉर्टलिस्ट यू. अगर आपने ऑलरेडी कुछ किया है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिमिलर वर्क किया है, तो आप वो भी डाल सकते हैं. दैट विल हेल्प अस इन फाइनलाइजिंग द स्टार्टअप्स. Anything else from anybody, from the border roads or from the startups? Done from my side.
Okay, gentlemen, thank you so much. 51 RCC project Yojak, headquarter DGBR. I'm thankful to each one of you for your time today. I hope the time that we have spent now is done justice to subsequently. Justice can only be done when you people apply, a good proposal is given to us, and we've got number of applicants for which the best person is selected for it. All right. And let me tell you, if there is a proposal, ऐसा नहीं है कि एक चैलेंज के लिए एक ही विनर होगा. हम number of winners could be up to 5 also, 6 also, right? इतने बंदे एक ही इसके लिए, अगर सबके प्रपोजल इतने अच्छे हैं, हम आप सबको सेलेक्ट करेंगे, सबको गवर्नमेंट की फंडिंग देंगे. ऑल राइट. तो just ensure that you are giving your best now, and just don't leave it at that half-hearted कि देखी जाएगी बाद में देखते हैं. ये नहीं, just sit, take out time, close it, apply. For all you know, you would be called for a this thing, shortlist. Okay, Mukul, final words from you. One more thing, sir. Yeah, please. जैसे कि सर ने एक टेक्नोलॉजी उनसे पूछा था कि एक्चुअली आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, तो ये डेफिनेटली पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है. बट इस चीज़ को क्या हमें प्रपोजल में डिस्क्लोज करना है, या फिर इस चीज़ को भी दैट मीन्स सिर्फ हम एक सिस्टम टाइप से उनको जस्ट शो कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर एग्जैक्ट एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन करके क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा, क्या रोड मैप होगा, एवरीथिंग, क्या क्या चीज़ें इक्विपमेंट्स यूज होंगी, कैसे होगा, ये सब चीज़ें डिटेल्स में देनी है. सी इक्विपमेंट्स एंड समथिंग तो बात अलग है, बट अगर आपकी वो जो रेसिपी है, फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना KFC की रेसिपी है या कोको कोला की रेसिपी है, वो रेसिपी शायद वो ना हो. ठीक है, आप अपने सीक्रेटिव रखना चाहेंगे. ठीक है, बट आप कन्विंस कर सकते हैं कि आप ये जो चीज़ है, this is what will be the end outcome, and broadly this is how I'm going about. ये हमने किया हुआ है. और आपकी अगर कुछ पब्लिकेशंस हैं, कुछ है जो आपने प्रूव किया है, या आपके लैब टेस्ट आपने जो करके अप्रूव हुए हैं, वो सब आप बता सकते हो कि ये सब सर्टिफाइड है, फाइन. एंड दूसरी, आपको अगर डर है कि अगर मेरा जो IP है या कुछ है लॉस होने की, मैंने पब्लिकेशन नहीं किया है बट अगर कोई और ले लेगा, डोंट वरी ऑन दैट. This is a portal by the government, and we are dealing with so many startups who are into innovations. So we respect the privacy on this, and be rest assured, even the people who will be there to in the selection panel, there are people from senior academicians are there, from IITs, all right, from DPSUs, from the nodal agencies. The people are there. So ऐसा नहीं है कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो कहीं चुरा ली जाएगी. वो दैट प्राइवेसी विल एंश्योर दैट IP विल नॉट बी समथिंग व्हिच विल बी स्टोलन और समथिंग. बात चोरी आई की कैन नहीं अश्योर सर, यू दैट. एक्चुअली एक कंडीशन ये भी है ना कि अगर हम कहीं पे पब्लिश कर देते हैं पब्लिकली, तो फिर हम उस चीज़ के लिए IP फाइल नहीं कर सकते हैं. ये भी एक कंडीशन. तो ये एक आपको पब्लिकली तो नहीं, आप अप्लाई जो कर रहे हैं आप जी उतना रिवील कीजिए. बाकी आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस में हम आएंगे ना, तो व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर शॉर्ट लिस्ट, यू कैन टेल दोस थिंग्स, सर्टेन थिंग्स. ऑल राइट. ओके सर, थैंक यू. बिकॉज हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है विच इज वन ऑफ द यूनिक, बिल्कुल ही यूनिक है दुनिया में ही. ठीक है, ऐसे ऐसे technologies है, one of a kind in this world also we have got. All right, not one, number of them. Yes, please. Mukul, if you are here, kindly I would request you to give the parting final shots, please. No, it's okay, sir. That's it from our side. All right, thank you, gentlemen and ladies, and I wish you the best. Please take that step, apply. Best wishes to everyone. Thank you. I'm done. Thank you, sir. We may log out now. Yes, thank you, sir. And this is a recording which we have done. So this recording will be posted on the YouTube. In case you want to revisit this thing, anything on that, you may do that. All right. Whichever we will restrict कि क्या क्या हमने डालना है, उतना पोर्शन हम डालेंगे इसमें. कोई sensitive information इसमें हम YouTube में नहीं डालने वाले. But this will be available for you to
revisit. The session has been recorded, just for info. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good day. Good day. Dishant.